Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to another Rainbow Learn to Use series. This video is specially dedicated to Rainbow setup users or the Fountain of Gold setup users. Last time हम लोग डिस्कस करना चालू किए थे about hedging, about dynamic hedging procedure to calculate कितना put आपको खरीदना चाहिए. We discussed regarding this, but उसके बावजूद भी और कुछ डिस्कशन रह जाता है beyond the process. So पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछना चाहिए everyone, that when this is actually why we are doing this hedging. First of all, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ब्रॉड मार्केट, नॉट नेसेसरीली कि अपना जो स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, if they are really good, they may not go down with the market, or they may go down a bit and then again go up. So इसमें अगर मुझे लगता है मार्केट वीक है या कोई भी स्टॉक्स पर्टिकुलरली वीक है, I always will prefer कि exit from that stock and find a new opportunity. But कभी-कभी होता है we are maybe holding a mother portfolio or we have stocks that we believe yes they are still strong, but आपको लग रहा है कि एक temporary headwind आ रहा है वहां, क्योंकि ये जो hedging activity है this is more like insurance to your portfolio. और हमेशा इंश्योरेंस को जैसे प्रीमियम लगता है, hedging will require a premium. That means it's a costly affair. इसमें जो स्ट्रेटेजी लेना चाहिए, दिस हेजिंग शुड नॉट बी अलोन कि आप एक पुट बाय कर लिए एंड मार्केट गोइंग डाउन आप हेज कर लिए, दैट्स इट. नो, इट शुड बी मोर लाइक इफ यू हैव अ वेरी साइजेबल पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो सच में बड़ा है, देन ओनली यू शुड थिंक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हेजिंग. और जब भी आप हेजिंग के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक व्हाट यू शुड टेक एन अप्रोच is one is more of a long term portfolio, which is more like mother portfolio. Mother portfolio अगर है जो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, उसके लिए एक अप्रोच. जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है जो आप मोर स्विंग खेलते हैं, उसके लिए अलग अप्रोच. Now in this fountain of gold setup, if you select the stock selection setup, cash stocks weekly or cash stocks less than weekly, in both case you'll be able to find the beta. Let's go to stocks. Let's go to some bank stocks, CSB Bank suppose. So if we select the weekly chart, we get the weekly beta, and if we get the daily chart, we get the daily beta of that stock. For example, CSB Bank weekly beta is 1.7. And if we look at the daily chart, you will see the daily beta is about 1.3. So there is a variation in the weekly and the daily beta. So if you own a mother portfolio, I think first concern is when to look at the weekly beta and when to look at the daily beta. So it is, I think the approach mere hisab se should be the first the purpose. If you have really a long term portfolio, and then you should more look for a weekly beta chart and go for a long term hedging. If you have a short swing portfolio and they're good, then you should go for short term hedging. लॉन्ग टर्म हेजिंग के लिए ये जो बीटा है, इसमें 26 पीरियड का इस्तेमाल किया जा रहा है. 26 पीरियड वीकली मतलब 6 मंथ, 6 months का पीरियड का दिस इज बीटा इज गेटिंग कैलकुलेटेड. सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर ऑफ द रेनबो सेटअप और द फाउंटेन ऑफ गोल्ड इज फॉरवर्ड लुकिंग, and some of the are more on a backward basis like the alpha and the beta, because it is purely based on past data. Clear? And we all the calculations of alpha and beta are the same, those are available everywhere. So when we go for the daily chart, that means it's more of a month, 1 month beta is showing. So if you are going for the daily beta chart, that means you are looking for to hedge your portfolio using 1 month or 2 month expiry options. Whereas if you are looking at the weekly beta, you are buying more of a 6 months long options to the minimum.
And difference is when you are going for the 6 months long options, not all the option strikes are liquid. That means 500 and 1000 strikes are liquid. आपको उसके उसमें position लेना पड़ेगा. The closest 500 strike. Suppose Nifty when it started going down, if we look at the Nifty chart, Nifty started going after reaching almost 22,640. So this should be currently, if one wants to hedge, the hedge should be either 22,500 या तो 22,000. So जब हम लोग long term hedge select कर रहे हैं तब हम लोग 500 and 1000 strike ले रहे हैं. और जब हम लोग शॉर्ट टर्म हेजिंग कर रहे हैं हम लोग जो आसपास आ रहा है, जो विच इज द क्लोजेस्ट और एट द मनी, जो स्ट्राइक लिक्विड है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म है तभी भी मैं 20,000 चूज करूंगा बिकॉज 20,000 इज द वेरी विल बी डेफिनेटली मोर लिक्विड. नाउ मेन क्वेश्चन जो हम लोगों को आंसर करना चाहिए rather than which options to buy is when we should consider this hedging. For example, if you are hedging in this period, you are actually losing money. How? Because all your options, put options are losing money, and the call options that you are selling, this should be the complete package. Insurance is you are paying a cost for the puts and you are recovering your cost by selling the call options. Call options बेच के आप इसका recovery कर रहे हैं. So during a major rally like this, call option may be risk hai, and put option is also losing its value. So first major question you should ask is when we should introduce this hedging. First of all, I will, if you go by my recommendations, I will suggest that first time you should even consider a hedging of your portfolio in the long-term portfolio when you see the short-term trend as neutral, like right now, the yellow background. So here the yellow background, and when the background color is green, you are not at all thinking with short-term trend ke saath, you should consider hedging your portfolio. So short-term trend neutral, you are starting off with the hedge dynamically calculating, जैसा हम लोग discuss किए थे, using the portfolio hedge calculator. Suppose nothing changes, ये हम लोग weekly stock beta के जरिए calculate किए थे approximately. Suppose बाकी value same रहता है, and you go for the daily chart, then the beta changes. Like here, first is Mahalife. MAHLIFE, Maha Life Science. When we see in the daily chart, we will be able to visualize the beta is much higher, not much, slightly higher. And if you go right now to the weekly chart, let's look at the weekly beta is lower, it's just 1. So daily, the volatility in the short-term portfolio, you will, in this case, you will require a much higher. Pehle it was 1. Now it is turning to 2.1. So with this, the actual puts that will require, जैसे जैसे हम लोग change करेंगे, हम लोग का hedge required, so उसमें change होगा. So before you start actually hedging, decide कर लीजिए which stocks are your more long-term portfolio stocks, which you definitely want to keep. Maybe there is a Reliance like Nestle. I love Nestle is one of my stocks. Like Pidilite is one of that kind of stock of mine. So ऐसे kind of stocks which you really want to hold, उनके लिए आप weekly chart में when you see the background color turning yellow in the Nifty, I think best would be Nifty and a mix of Nifty 500. Nifty 500 may, if you see the say background color yellow, that you can then only you can introduce the hedge, because overall Nifty 500 एक better measure है hedging का, better measure है sorry stocks का, overall stocks का. But Nifty के साथ since आप hedge करेंगे Nifty के option, so Nifty chart देखना भी ठीक है. So background and Nifty is a overall representative of हमारे market का. So ये जो background color yellow है इसके साथ you can introduce the long term hedging. So long term hedging 22,100 के पास मतलब 22,000 का 6 months जो long वो हम लोग देखेंगे.
और जैसे ही फिर से बैकग्राउंड विल नाउ टर्न टुवर्ड्स, विल एग्जिट फ्रॉम दैट हेज एंड विल कंटिन्यू। सो हेजिंग के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड के ऊपर हम लोग बहुत नजर देंगे। सिमिलरली मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म जो पोर्टफोलियो है आप लोग का, so short term portfolio, I think it is better to exit the stocks, but I think my strategies will be similar. This is where, this is the candle where you are going to introduce the hedge, और ऐसे करने से I think निफ्टी वहां से थोड़ा नीचे ही गया है, so your particularly hedge has worked. नाउ हेजिंग के लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा, नेक्स्ट इज कौन सा स्ट्राइक चूज करें फॉर शॉर्ट टर्म हेजिंग या तो इवन फॉर लॉन्ग टर्म हेजिंग। सो हमारे जो हेजिंग कॉस्ट है उसमें वन ऑफ द मेजर कंसर्न टू कंपोनेंट्स, ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, मतलब थोड़ा इन द मनी पोर्शन एंड थोड़ा प्रीमियम पोर्शन। अगर हम लोग आउट ऑफ द मनी से, जैसे 22,000 इज करंटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, तो उसका जो भी प्रीमियम है, चलिए चलते हैं, let's go to NSE option chain, NSE India option chain, and उसमें हम लोग एक्सपायरी जो सिलेक्ट कर रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मंथ, सो क्वार्टरली इज गुड, क्वार्टरली ऑप्शन चूज करना। तो सितंबर 2024 22,000 का ऑप्शन रिलेटिवली लिक्विड, नॉट वेरी लिक्विड, रिलेटिव लिक्विडिटी है उनका पुट में 415 to 426 इज द ऑप्शन का प्राइस ओवरऑल। सो दिस इज वेयर द, तो ये जो अगर 22,000, ये जो पूरा का पूरा 415 इज आवर प्रीमियम, मतलब पूरा का दिस इज द फुल टाइम वैल्यू। सो हम लोग क्या चाहेंगे कि थोड़ा कम टाइम वैल्यू पे करने के लिए, और तो कभी कभी हो सके ऑप्शन हो, कभी कभी ऐसा अपॉर्चुनिटीज ना हो। सो जैसे अगर आप क्वार्टरली ऑप्शंस देख रहे हैं तो यहाँ पे 22,000 के बाद 22,500 नहीं। सो व्हाट वी कैन डू इन सच केस, से वी नो जून इज मोर लिक्विड क्योंकि हाफ ईयरली मंथ है, so in June rather September में है नहीं, so we can go for the 22,500, 22,500 जो है already in the money। बेसिकली क्या हो रहा है उससे, मैं जो स्ट्राइक सिलेक्ट कर रहा हूं, जैसे ही ये येलो बैकग्राउंड दिख रहा है, इसका जो टॉप है, टॉप के आसपास मतलब 22,700, नाउ 22,000 दूर हो गया, सो 22,500 हम लोग चूज कर रहे हैं ओवरऑल बाई करने के लिए, मतलब दैट टाइम दैट वुड बी द क्लोजेस्ट, मतलब ये जो टॉप के आसपास जो स्ट्राइक है उसके साथ से हम लोग हेज करना पसंद करेंगे। सपोज दिस इज द वीकली चार्ट, अगर हम लोग वीकली हेज करने जा रहे हैं, सो दिस कैन बी वन कंसिडरेशन कि ऑलरेडी थोड़ा इन द मनी से हम लोग, जो इन द मनी ऑप्शन होने से थोड़ा टाइम वैल्यू कम हो जाता है, टाइम वैल्यू को कम करना इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। और जैसे अगर हम लोग बैकग्राउंड येलो देखेंगे तब जाके कॉल सेलिंग, ओवरऑल कॉल सेल करना विल बी प्रॉफिटेबल। नहीं तो जब बैकग्राउंड ग्रीन है, ये जो फेज में मार्केट इज राइजिंग, जो कॉल हम लोग सेल कर रहे हैं उसमें रिस्क है, सो दैट्स व्हाई प्रेफर करेंगे जब बैकग्राउंड येलो होगा, विल क्रिएट दिस हेज। ये हेज एक कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पैकेज मतलब पुट which is partially getting financed by selling the calls, और ये हमेशा नहीं, कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं करना। फर्स्ट वी वांट टू स्पेसिफिक टाइम जब हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जब ये शॉर्ट ट्रेंड के साथ, शॉर्ट ट्रेंड में जब चेंजेस हो रहा है, स्पेशली इन द वीकली चार्ट इन द येलो बैकग्राउंड, यू शुड डेफिनेटली कंसीडर हेजिंग। वेयरएज हम लोग अगर डेली चार्ट जा रहे हैं, डेली चार्ट में भी येलो बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड, these are serious area to consider hedging your portfolio. So I hope ये जो वीडियो है, this answered more queries जो आप लोगों के मन में आया था regarding the hedging. I hope some of them got answered. So once again इस वीडियो अगर आपको हेल्प किया, don't forget to like and subscribe. All the best to you and once again happy trading.